बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle FX 21.1 and ORDS 21.4 with database 12c release 1 in Windows 10 InshaAllah quickly. आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle FX 21.1 और ORDS 21.4 को database 12c release 1 के साथ Windows 10 में इंस्टॉल किया जाता है जल्दी से. So first we will create a folder in C drive with the name 12CR1 underscore 21.1. सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 12CR1 underscore 21.1 के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर मजीद दो फोल्डर बनाएंगे DB और ORDS के नाम के. And under this folder we further create two folders with the name DB and ORDS respectively. Extract ORDS 21.4 folder in ORDS folder which we have just created, so we do not need to copy and paste ORDS folder. अब हम ORDS 21.4 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है. तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा. The downloadable link of ORDS 21.4 is available. However, we have already downloaded. ORDS 21.4 का डाउनलोडेबल लिंक जो है वो मौजूद है, अलबत्ता हमने उसको पहले ही डाउनलोड कर लिया है. Extract ORDS, extract Apex 21.1 folder in 12CR1 underscore 21.1 folder. So we do not need to copy and paste Apex folder. अब हम Apex 21.1 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे 12CR1 underscore 21.1 के फोल्डर के अंदर. तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा. The Java version which we are using is Java 8 update 211. जो Java का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो Java 8 update 211 है. Run database setup with administrator rights. Database का सेटअप चलाएंगे. I do not wish to receive security updates, so I will uncheck this option. Hit next button. मैं security updates नहीं लेना चाहता तो मैं इस ऑप्शन को अनचेक करूँगा और next का बटन दबाऊँगा. Option will be create and configure a database. Hit next button. ऑप्शन जो है वो क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर डेटाबेस का रहेगा. नेक्स्ट का बटन दबा दें. ऑप्शन विल बी डेस्कटॉप क्लास. हिट नेक्स्ट बटन. ऑप्शन डेस्कटॉप क्लास रहेगा. नेक्स्ट का बटन दबाएं. ऑप्शन विल बी यूज विंडोज बिल्ट-इन अकाउंट. यू कैन यूज अदर ऑप्शन एज वेल. हिट नेक्स्ट बटन. यूज विंडोज बिल्ट-इन अकाउंट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे. आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट का बटन दबाएं. Define Oracle base while letting browse button till DB folder. अब Oracle base बताएंगे ब्राउज का बटन दबा के DB के फोल्डर तक. Define global database name, password, confirm password from your choice, uncheck, create as container database option. Hit next button. ग्लोबल डेटाबेस नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड देंगे अपनी मर्जी से. क्रिएट एज कंटेनर डेटाबेस के ऑप्शन को अनचेक करेंगे और नेक्स्ट. head install button.
क्लिक ऑन पासवर्ड मैनेजमेंट बटन। पासवर्ड मैनेजमेंट का बटन दबाएंगे। प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर सिस एंड सिस्टम। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे सिस और सिस्टम को। Unlock HR and escort user and provide password and confirm password for both of them, which will be HR and Tiger respectively. Unlock करेंगे HR और escort के यूजर को और इनको पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे जो कि HR और टाइगर होगा बिल तरतीब। हिट ओके बटन, ओके का बटन दबाएंगे। यस ओके। Oracle Database 12c Release 1 has installed। Oracle Database 12c Release 1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज का बटन दबा दें। हिट क्लोज बटन। Open command prompt and reach where Apex folder is available in database 12c release 1 directory। command prompt खोलेंगे और वहां जाएंगे जहां Apex का फोल्डर मौजूद है database 12c release 1 की डायरेक्टरी में। Now connect with sysdba। कनेक्ट होंगे sysdba से। Check SGA maximum size by running show parameter SGA command। If it is less than 3000 MB then we have to increase it। SGA maximum size पता करेंगे show parameter SGA की कमांड चला के। अगर 3000 MB से कम होगी तो हम उसको बढ़ाएंगे। अब हम डेटाबेस को बंद करेंगे शट इमीडिएट की कमांड चला के। स्टार्ट check SGA maximum size again in order to make sure that the changes we did has reflected or not। अब हम दोबारा SGA मैक्सिमम साइज पता करेंगे ताकि ये तसल्ली कर लें कि जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है या नहीं। So the changes we did as reflected। तो जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है। In database 12c release 1 Oracle Apex 4.2 is available by default। So we are checking its availability by running this command। Oracle Database 12c Release 1 में Apex 4.2 जो है वो पहले से मौजूद होता है तो हम उसकी मौजूदगी का पता चला रहे हैं ये कमांड चला के। तो it is available, ये मौजूद है। We have to uninstall this Apex first before installing a new version। हमें इस Apex के वर्जन को हटाना पड़ेगा Apex का नया वर्जन इंस्टॉल करने से पहले। ये जरूरी है कि हम इस पुराने वर्जन को हटाएं नया वर्जन इंस्टॉल करने से पहले।
So now it has removed. ये रिमूव हो चुका है. Now we will type exit. अब हम exit लिखेंगे. Now we will reach where Apex folder is available in 12CR1 underscore 21.1 folder. अब हम वहाँ जाएंगे जहाँ Apex का फोल्डर मौजूद है 12CR1 underscore 21.1 के फोल्डर में. Now we will install Apex by running this command. अब हम Apex को install करेंगे ये कमांड चला के. Oracle Apex 21.1 has installed. Oracle Apex 21.1 जो है वो install हो चुका है. Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे. यूजर जो है वो एडमिन रहेगा. Provide email and password from your choice. User will be admin. Provide email and password from your choice. Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे. Provide password for Apex listener and Apex REST public user which will be Oracle in lowercase. पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex REST public user को जो कि Oracle होगा छोटे और फॉर्म में. Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे. Exit this command prompt. इस command prompt को बंद कर देंगे. Open new command prompt with administrator rights. नया command prompt खोलेंगे administrator के राइट से. वहाँ जाएंगे जहाँ ORDS का फोल्डर मौजूद है. Where ORDS folder is available. And when we reach there, run this command. जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर ये कमांड चलाएंगे. Now we will provide a configuration path where we want to configure. Enter. If your port is 1521 then hit enter. If your port is different then define your port and hit enter button. अगर आपकी पोर्ट 1521 है तो आप एंटर का बटन दबा दें. अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं. ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन 2 रहेगा. प्रोवाइड योर सेट. अपनी सेट दे दें. एंटर. Provide password and confirm password for ORDS public user which will be Oracle in lowercase. पासवर्ड और confirm password देंगे ORDS public user को जो कि Oracle रहेगा छोटे और फॉर्म में. Enter. To find your port, navigate to Oracle ORDB 12 home 1. Expand it. अपनी पोर्ट पता करने के लिए Oracle ORDB 12 home 1 में जाएं. इसको फैला लें. इसको खोल लें. Come to net manager. मैनेजर पे आए. इसको खोल लें. Administrator username will be sys. Administrator username sys रहेगा. Provide password and confirm password. पासवर्ड और confirm password दे दें. Enter. Provide password and confirm password which will be Oracle in lowercase. पासवर्ड और confirm password देंगे जो कि Oracle होगा छोटे और फॉर्म में. Enter. Provide password and confirm password for Apex listener and Apex REST public user which will be Oracle in lowercase. पासवर्ड और confirm password देंगे Apex listener और Apex REST public user को जो कि Oracle होगा छोटे और फॉर्म में. Enter.
Copy images folder from the Apex installation folder. कॉपी करेंगे images के folder को Apex के installation folder में से और उसको चस्पा करेंगे यहाँ. Enter. Now provide a path to Apex static resource location till images folder. अब हम Apex static resource location को बता देंगे images के folder तक का. Enter. Provide path from your choice. When Oracle REST data services initialize a pair, we can access Oracle Apex 21.1. जब Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 21.1 को इस्तेमाल कर सकते हैं. Do not close this command prompt because if it closed for any reason, we cannot access Oracle Apex 21.1. However, we can reopen it as well. इस कमांड prompt को बंद मत करिएगा क्योंकि अगर ये किसी भी वजह से बंद हो जाएगा तो हम Oracle Apex 21.1 को इस्तेमाल नहीं कर सकते. अलबत्ता हम इसको दोबारा खोल सकते हैं. ओपन कमांड prompt विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स. कमांड prompt खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से. वहां जाएंगे जहां ORDS का फोल्डर मौजूद है. ORDS folder is available and when we reach there, run this command. जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो फिर ये कमांड चलाएंगे. Oracle Apex 21.1 and ORDS 21.4 with database 12c release 1 has installed in Windows 10. Oracle Apex 21.1 और ORDS 21.4 database 12c release 1 के साथ Windows 10 में